Yeah. So good evening, everyone. Can somebody confirm if I'm audible or not? Yes. Yeah. Thank you very much. So uh, probably I will keep talking in Hindi and English both, right? So that people can understand. And I'll keep it quite simple. I mean, easy to understand to everyone, right? So today we will be discussing on stock technical setups, how they, I mean, कैसे बनते हैं, कैसे बिहेव करता है स्टॉक, वेयर टू बाय, वेयर टू पुट स्टॉप लॉस, and how to plan a trade, right? On different kind of setups. So that we will discuss today. So before we discuss, let me give my brief introduction. So my name is Arvind, and by qualification, I am a cost and management accountant, and I'm an MBA as well, executive MBA in corporate finance. Right now, working with one of the auto MNC as senior manager finance, and before my current job, I work with various, multiple MNCs like General Motors, ITC, and all. So, and I have been in market for last 5 to 6 years, and whatever I have learned in markets in last 5 6 years, I will be sharing my learnings as well. Okay. Yeah. So, can we move to? Let me start. Okay. Yeah. So there are different kind of indicators in stock markets, and most of the traders uses. Some trader use moving averages, trend line, Fib, RSI, MACD, Bollinger Band, and there are so many indicators. Today we will not be discussing indicators. तो indicators पे ज़्यादा आज हम बात नहीं करेंगे. We will be talking on more on technical setups कि stock के technical setups कैसे बनते हैं और how to identify those setups. And another point is, until unless you see the setups by your naked eyes, और आपको आंखों से देख के पता ना चले कि सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा है, it means there is some complex situation, right? So setups should be easy to understand and very simple. It should not be a complex setup. अगर complex setup है तो इसका मतलब there is some problem in that, right? So it should be very very simple. Okay. Now coming to the technical setups. Yeah. So technical setups, what I say is psychology of mass traders. मतलब technical setups क्या है? Technical setup है कि जो traders हैं in market, how they psychologically behave when certain stock behave in certain way. अगर ऊपर जा रहा है तो ट्रेडर कैसे बिहेव करेंगे, नीचे आ रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, हाउ द ट्रेडर्स विल बिहेव, कोई सर्टेन काइंड ऑफ सेटअप बना रहा है तो कैसे ट्रेडर्स बिहेव करेंगे. So technical setups is the psychology of mass traders. Okay. So in the technical setups, the most common used setup is cup and handle. हम बहुत बार देखते हैं कि कप एंड हैंडल है, लोग डालते भी है, बहुत सारे ट्विटर पे आप देखते होंगे कि देयर इज अ कप एंड हैंडल. सो कप एंड हैंडल ब्रेकआउट विल बी देयर, सो लाइक दैट. सो नाउ टॉक अबाउट द कप एंड हैंडल सेटअप. सो कप एंड हैंडल क्या है? कप एंड हैंडल एक कप का फॉर्म आपको दिखना चाहिए सेटअप. जब स्टॉक का आप मूवमेंट आप देख रहे हैं तो दैट शुड फॉर्म ए कप टाइप सेटअप, राइट? कि एक पूरा राउंड सर्कल में एक कप बना, राइट? देन एक हैंडल बनना चाहिए. अब नाउ द हैंडल का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. सी, हैंडल का पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हैंडल कैसे बिहेव करता है दैट डिपेंड्स कि स्टॉक कैसे फ्यूचर में आगे बिहेव करेगा. द पॉइंट इज, माय पॉइंट इज हियर, अगर आपका इस कप का हैंडल ऐसे फ्लैट नीचे आ जाता है, राइट, तो क्या वो परफेक्ट कप एंड हैंडल होगा, राइट? या स्टॉक यहाँ पे कप बनाया, उसके बाद हेयर हेयर इट इज कंसोलिडेटिंग और यहाँ ऊपर से ऊपर स्टार्ट हो गया मूव करना, राइट? सो whether that setup will be better. Now understand from a trader's point of view, just think of that कि कप बना, ठीक है, after formation of this cup, this stock failed suddenly from here, right? And it came back to here, I mean that around the bottom of the cup.
and then again started rising a bit. So वहां पे स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. Now the point is कि बीइंग ए कॉमन मैन, बीइंग ए ट्रेडर, आप जस्ट ऐसा सोचो कि अगर स्टॉक ने बिहेव किया है इन रॉन्ग वे, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? So we should find the handles that does not come again to the bottom, or from the, at least from the mid of the cup. I mean कप के बीच से नीचे नहीं आना चाहिए हैंडल. अगर आ रहा है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम. इसका मतलब क्या है, आप सिंपल समझो कि यहाँ से जिन्होंने कप जब फॉर्म हुआ, जब यहाँ पे खरीदना शुरू किया, यहाँ तक गया और सडनली somebody sold quickly, right? And that is the reason कि कप का हैंडल फेल हुआ. There is no other reason other than sale, right? So this handle should be strong enough that the buying is coming in that. Okay, so because people who buy here वो यहाँ पे सेल करेंगे, and that is the reason वो देख के रखते हैं कि यहाँ लेफ्ट में रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पे सेल करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही सेल करना शुरू करेंगे वो नीचे आएगा. बट जब नीचे आएगा, जब ट्रेडर्स विल बी देयर एंड वाचिंग दैट कि बॉस ये यहाँ पे सपोर्ट पे आ रहा है, so let us start buying again, right? And in this formation of handle, the volume should dry. अगर वॉल्यूम ड्राई नहीं हो रहा है, इट इज गोइंग डाउन एंड डाउन, डाउन एंड डाउन विद हाई वॉल्यूम्स, देन देयर आर chances that the cup, the handle and the formation of cup and handle will fail, right? Now coming to कि कहाँ बाय करना चाहिए या कहाँ पे एंट्री करना चाहिए. सी द ट्रेडर्स, जो बहुत पुराने ट्रेडर्स हैं मार्केट में, दे ऑलवेज से बाय एट कंफर्म एंट्री व्हेन द स्टॉक ब्रेक आउट फ्रॉम द resistance. I mean this resistance, and then from here, right? People say that, but there are but sometimes there are entries at the lower pivot points as well, because यहाँ पे आपको low risk entry मिल जाता है, right? So आप buy यहाँ पे भी कर सकते हैं and then put stop loss here. maybe a pilot position, एक छोटा position यहाँ पे ले सकते हैं, right? छोटा position यहाँ पे लिया, and then if it is going in right direction, उसमें और आप add कर सकते हो यहाँ पे when there is a confirm entry. Okay, so in that way, now the point is, keep in mind that this I mean you need to keep in mind that you should have a stop loss in system. If a stock's coming down from the stop loss point, then it's a failure of the cup and handle pattern. Okay, you should be quickly moving out of that position. And then another point is, when this handle is basically breaking out, right, then the volume should increase. It should not happen that price तो बढ़ रहा है but volume नहीं आ रहा है. So there are chances that this pattern is getting failed, right? So we should be keep in mind, while the stock is being breaking out, the volume should increase. Okay, everything is written here as well, right? People talk about the targets की target क्या रहना चाहिए, अगर cup and handle बनता है तो कितना target आगे future में होगा, right? Now the point is, ultimately what traders say, that whatever is the depth of this cup, just I mean you just make a line and then double that here, so that comes the target of the cup and handle pattern. But what I'm saying is that rather than going for the targets, you should keep your stock moving on till the time it doesn't bend. It means आपने एक एंट्री लिया, उसको चलने देना है, right? It is very difficult once a stock start running, then keeping that stock to run, right? That is one of the difficult tasks, because profit दिखता है, right? But अगर आप उस स्टॉक का कोई भी ट्रेंड इंडिकेटर, आई मीन मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस, वो सब देखोगे तो you can see what is the strong moving average or strong trend line support. So you can see that as well, and then let the stock run till the time that breaks that trend line or moving average, like that, right? So you can make the good money in stocks. Okay, now coming to, I can see, so Piyush, are you there now? Hello, can you hear me?
PUC? Anyone can confirm if they can hear? Yes, yes, we are listening you. Yeah. So PUC, just keep in mind if anybody has any queries, just let me know because I'm in presenter view, so I'm not able to see any queries, etc. Right? So what we can do is there are two ways. One is that we can take queries later on as well, and what we can do, we can take queries at the time of discussing the setups itself. Okay. Yeah. Now, so cup and handle is now clear. Now coming to the saucer and handle pattern. So I mean, uh, we can see certain examples as well. If anybody has any live examples, if you want to see, you can mention the names of stocks in chat box, and then we can see. Okay. Now coming to the saucer and handle. So saucer and handle and cup and handle, दोनों में basically the difference is saucer and handle is more I mean flattest rather than the deep it like cup. So अगर आप यहाँ पे देखोगे, it is more flattest, it is not that deep like cup, right? It is more flattest. If you want to see saucer and handle pattern, you can see certain charts of like gravita and all there, that saucer and handle is there in gravita chart. So if you see the weekly time frame for around 4-5 years, you can see that chart itself. So saucer and handle थोड़ा cup and handle type ही रहता है. Handle थोड़ा छोटा बनता है और flat ज्यादा होता है, थोड़ा base बड़ा होता है for saucer and handle. Okay, that's the only difference in saucer and handle. Now coming to the another important pattern, which is called VCP, volatility contraction pattern. So this is one of the I mean most used pattern like cup and handle. So it is Mark Minervini's pattern. If you follow Mark Minervini at Twitter, so you can see how I mean he trades in this kind of pattern. So in VCP, the important point is there are two contractions. One is the time contraction, another is the price contraction. So time contraction in the sense that from here, if I talk about this point, how much time it is taken in to this point, right? This is one part, and then in second contraction the time is reduced, right? If you see from here to here, and in third contraction again the time is being reduced. I will show the example as well. I have taken one example of a stock as well. Okay. Another is the price contraction. So price contraction, if you see from here to here, how much point the stock has been moved. Okay. Now the next contraction is basically the reduction in price movement, right? And this is a third contraction. In three contractions, the stock is basically now the stock is in uptrend, then it is consolidating, and then the price is and price contract, and the time is also contract. So where to take entry? Now let me show you an example. So if you see here, so from here to here, there is the movement is this much, right? From here to here, the movement is small, right? And from here to here, the movement is basically contracted. It can be in any time frame. I mean, these patterns you can see in any time frame, maybe daily, weekly, monthly, whatever time frame suits to your trading skill, you can see these patterns. Okay. Now the point is, what are the chances of pattern? So it depends upon the time frame. If you are seeing in 5-minute candle, definitely there is chances to getting failed that pattern. If you are seeing in our daily time frame and weekly time frame, there are chances that it will be a good pattern and the move will follow, right? So here, if you see the this is the price contraction. Again, this is again the price contraction. Here, the price is basically contracted that much. I mean, it is contracted a lot, right? Now, talking about the time contraction from here to here, this take for making this U, it took I mean, I have not taken here time, but ठीक है, ये दिखने में पता चल रहा है, right? It has been contracted. यहाँ पे और कम हुआ और यहाँ पे और कम हो गया, right? Now where to buy? You have to buy when the stock is basically breaking out the least resistance, right? The last line है least resistance का. Here you can buy and you can put a stop loss here, right?
and let the stock run again, because I never keep targets for any stock. It always depend upon I mean how much risk you are taking and how you are I mean getting your position run. Let the position run and then say when to sell, right? So this is VCP, volatility contraction pattern. Okay, so you will be seeing that many places. Lots of people put that there is a VCP and then I mean we should buy now. And second point, what I have feel is there are many type of VCPs. This is an uptrending consolidating VCP, right? There are VCPs which are in downtrend as well, and people buy that. I avoid the downtrend VCPs personally because I have seen getting them failed. Okay, maybe some trend line are there, you can put the trend line and see if it is coming into our directions or not, but in my experience I avoid trading any downtrend VCPs that tend to fail a lot of time, right? Yeah, this is VCP. Then coming to the flat base, so I've taken example of Tanla itself. It's a Tanla का अगर आप देखोगे, it started running from around 30 rupees, it went on to around 1000 rupees, and in whole bull run of last 1 year, right? This stock पूरा consolidate हुआ, पूरा साल consolidate हुआ, and there has been a range from here to here, right? If you can see from your eyes, you can see easily, I mean कि किस range में stock चला है, right? And then once it start breaking out from here, it took just 4 weeks to reach to get this stock doubled. So flat base basically, it generally it occurs after an uptrend. Stock is an uptrend, then it is generally a second base, क्योंकि first base जब अच्छा रन होने के बाद में stock consolidate होता है, तब generally ये second base के time पे flat base बनता है. And when this flat base is basically form hota hai, then that point of time the volume should reduce, right? Volume should decrease at the time of consolidation or forming of this flat base, right? Once this flat base breaks out, then you can take the entry. Lower of the line of the flat base can be your stop loss, and again you can start running. Now मैं बस एक ही चीज बोलता हूँ, whoever is doing trading, he should get himself, I mean, he should practice so much at charts that he can just see the chart and say, boss, kaun sa form, kaun sa pattern is forming, right? So you should practice such I mean, so many stocks that by just seeing the chart, you can see कि boss ये flat base बन रहा है, cup and handle बन रहा है, VCP बन रहा है. If you have to put, you can put certain trend lines or moving average into that, because to get your entry at better price and reduce your I mean stop loss margin, so that you can, anyone can do. Because if you see here, ये stock पूरा साल इतना contract हुआ, इतना consolidate हुआ कि 50 DMA और 200 DMA साथ में आ गया, right? And that is where अगर एक stock 15-20 गुना होने के बाद में इतना शानदार कंसोलिडेट हो रहा है and 50 DMA और 200 DMA पे सपोर्ट ले लिया and then started breaking out, that is one of the best entries to make, right? So this is flat base. Now coming to bull flag. So bull flag is another example, like in flat base, if you see ये पूरा flattest रहता है, इसका range जो रहता है वो ऊपर और नीचे का almost same रहता है in flat base, right? But in case of bull flag, ये flat base का जो ऊपर वाला पैटर्न है, जहां पे ये वाला पॉइंट है, ये ऊपर की तरफ है. in bull flag it tends to get down, right? आपके जो हाई फॉर्मेशन, आई मीन यहाँ पे जो हाई बनाया, उसके बाद एक लोअर हाई यहाँ पे बनेगा, एक लोअर हाई यहाँ पे बनेगा, एंड सेम वे हेयर, राइट? इट मींस कि जब स्टॉक अप ट्रेंड में था, हियर इज ए प्रॉफिट बुकिंग, ओके, हियर इज ए प्रॉफिट बुकिंग, बट कीप इन माइंड कि आपका जो ये जो लोअर हाई यहाँ पे लोअर हाई जो बना रहा है, सॉरी लोअर हाइज राइट यहाँ पे, एंड हायर लो एंड लोअर लोज, ओके, दैट शुड नॉट ब्रेक द प्रीवियस जहां पे भी उसने ब्रेकआउट दिया. ऐसा ना हो कि यहाँ से बैंड हो गया और प्रीवियस ब्रेकआउट को भी फेल कर दिया. ऐसे नहीं बनना चाहिए. प्रीवियस अप ट्रेंड है,
and then stock is contracting, and there is a range, and once it breaks out from here, you can take your entry and put your stop loss here. And again in consolidation, there should be, the volume should reduce in case of bullish flag. Sometimes the flag is basically uptrend hua और flag ka this mouth is in down, like in down formation. If it is an upside formation like this, right, then that is called the bearish flag. And many a times I have seen that bearish flags are tend to fail. Okay, the only reason in is that because कि uptrend गया, stock का price बढ़ता जा रहा है, but जो weak hands है ना, those are not getting out अगर कोई bearish flag है. But in this formation जो weak hands होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, and then again stock again start moving to the uptrend direction. Okay, now coming to the inside bars, that can be daily. So all these pattern can be on any time frame. It depends upon someone's how someone want to trade those patterns, right? अगर किसी को डेली करना है तो डेली टाइम फ्रेम देख सकते हो. somebody wants to have more calm and complex कि आराम से वीकेंड पे देखना है, वीकेंड पे स्टडी करना है, तो वीकली टाइम फ्रेम देखो. let the stock run as per the weekly time frame itself, and then book profit accordingly, right? Now in inside weekly inside bars, again it's an uptrend, stock is an uptrend. Then the weekly closing and weekly opening points, like the candle formation is basically within the previous week's high and low, right? एक आध यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, but I have tried to take an example जो बिल्कुल लेटेस्ट था. ये अभी पीछे फॉर्म हुआ था last to last week in trend, and from here it started running. यहाँ से 53 से एक बार ब्रेकआउट होने के बाद it went around 78 or 79 something. Then again market consolidate, वो नीचे आ गया. but ultimately my point is कि वीकली, अगर मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द वीकली टाइम फ्रेम में आपका एक वीक का ये वॉलेटिलिटी था. सिंपल मींस द बायर्स एंड सेलर्स आर सो मच कि यहाँ पे बायरों ने बाई किया, यहाँ पे सेलर्स ने सेल के स्टॉक को नीचे लेके आ गए, फिर यहाँ पे बायर सेलर का लड़ाई चलता रहा, राइट? और जो बेसिकली उसका प्राइस का मूवमेंट था वो कॉन्ट्रैक्ट होता चला गया विद इन द लिमिट ऑफ प्रीवियस हाई एंड लोज, राइट? And then from here it start running, right? So that is how the weekly inside bar itself, like the bars are within the previous week higher lows, right? So that is called the weekly or daily, the inside bars. Okay, now coming to the triangles. So ascending triangle, again it's a pattern. We are talking about all the bullish patterns here, right? We are not talking about the bearish patterns here. So it is again another bullish pattern, ascending triangle. Stock is in uptrend, okay? Then start consolidating, okay? And while consolidation, the initial move is in times as well. It is in price, the move is quite high. Then it reduces, and here it started breaking out from the pattern. Okay, so you can put some trend lines for the better understanding of the chart. You can see that the lower, there are lower highs and then higher lows. Okay, and once you put, so basically the trend line is basically to see how the stock are behaving. You can see by eyes itself, but अगर आपको और थोड़ा सा परफेक्शन लेके आना, यू कैन पुट द ट्रेंड लाइंस, यू कैन सी कि फॉर्मेशन है या नहीं है. बट बाय एक्सपीरियंस जब आप धीमे धीमे ट्रेडिंग करना शुरू करते हो, यू सी लॉट्स ऑफ चार्ट्स, यू गेट टू नो कि कौन सा कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, राइट? एंड देन द स्टॉक अगेन कंटिन्यूज द अप ट्रेंड. You can put stop loss here as well if you want to have a small, you can take a small position with stop loss here. Then if it is moving in your direction, you can then increase your position here, right? Even for better entry, sometimes sorry, for better entry नहीं कि रिस्क थोड़ा लोग सोचते हैं कि बहुत छोटा है, काफी लो रिस्क सेटअप हो जाएगा, तो लोग थोड़ा बढ़ा भी देते हैं. बट आई ऑलवेज अवॉइड इंक्रीजिंग द स्टॉप लॉसेस, बिकॉज अगर कोई पोजीशन एक बार ब्रेकआउट होने के बाद में और अगर वो वापस नीचे आता है शेयर, तो इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम, राइट? वी नीड टू कीप
only those stock in our portfolios which are running into our direction. It does not mean that stock should run in one way itself, right? Like here, if you see, यहाँ गया, but यहाँ पे आया नीचे, there will be contractions. The stock will come again to consolidate, but uh, it cannot be that stock यहाँ से move हुआ, यहाँ तक आया और यहाँ पे fail होके वापस आ गया. Then there is a problem, right? But एक बार stock uptrend continuation हो गया, then there will be a small pullbacks with lower volumes. Let them be there. Let's keep the stock in your portfolio until unless the trend bends. Okay. Now another pattern is descending upper trend. Symmetric triangle. So symmetric triangle is basically again a uptrend. It saw then stock start making lower highs and higher lows. सो इट इज काइंड ऑफ, अगर आप उसको डिसेंड ये सिमेट्रिक ट्रायंगल को अगर ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आप इसको यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन लगाओगे और जब आप इसको पैटर्न बनाओगे तो आपको कई बार ऊपर की तरफ से देखोगे तो फ्लैग पैटर्न भी लगेगा, राइट? बट आप जब जैसे ही आप नीचे का एक ट्रेंड लाइन लगाओगे यू विल गेट टू नो कि नहीं यार ये तो सिमेट्रिक ट्रायंगल है, पूरा प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता चला जा रहा है और वॉल्यूम कंसोलिडेट होते चले जा रहे हैं. एंड देन फॉर बेटर एंट्रीज यू कैन टेक हेयर एट पाइवट पॉइंट बाय द ट्रेंड लाइन. जहाँ पे भी ये पाइवट पॉइंट बना है यहाँ पे एंट्री करो और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन सी द ट्रेंड. ठीक है. नाउ कमिंग टू डबल बॉटम. सो डबल बॉटम इज बेसिकली a pattern like generally double bottom आपका जब बनता है तो it form basically in a down trend stock. जब आपका एक down trend stock आया, stock is in down trend, then stock started framing some setup at the lower of the bottom, right? इन जनरल डबल बॉटम अगर आप देखोगे तो सब ज्यादातर डबल बॉटम्स इन डाउन ट्रेंड स्टॉक्स, राइट? एंड देन द स्टॉक स्टार्ट रनिंग. एंट्री बॉट आप करोगे हमेशा जब डबल बॉटम का, इफ यू सी हेयर, सो फ्रॉम हेयर यहाँ पे ऑब्वियसली ये मिड लाइन बिल्कुल इस चार्ट में दिख रहा है कि मिड लाइन बिल्कुल आपका जो लेफ्ट में रेजिस्टेंस है वहीं तक आया है. समटाइम्स इट इज at lower level as well, like from here it came here, then it came here and then it start running. So the center point of this W, right, that is where you need to take entry. Once it start breaking out in this formation of W from here, right? अगर ये नीचे है तो आप थोड़ा नीचे भी एंट्री कर सकते हो, right? When it is there you can buy here itself, right, and put a stop loss at the bottom of the W formation. Okay. Then again, profits, people put certain targets. I don't put any target in any of the entries. It's all about how stock behaves once I took the entry. If stock is not behaving properly, अगर यहाँ से वो नीचे जाना शुरू करता है तो मैं immediately I used to get out of the stock. मेरी साइड में जो स्टॉक चलता है I used to keep that in my portfolio. जो मेरी साइड नहीं चल रहा है, मेरा सिंपल पॉइंट है बॉस, इट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम, लेट्स गेट आउट ऑफ दैट, राइट? इन एनी केस आई डोंट अलाउ माय स्टॉक टू गो बियॉन्ड 7% ऑफ माय कैपिटल, ऑफ माय पोजीशन, राइट? समटाइम्स क्या होता है कि वो थोड़ा ऊपर नीचे अगर 1-2% करना पड़ता है कि अगर इफ आई एम सीइंग देयर इज अ गुड सपोर्ट एट below the 1% or 2%, then I give a bit room, right? Otherwise I don't give any room. Even if it is not behaving properly, I used to cut my position even early than the 7% as well. Now my question to all is, do chart patterns fails? Yes, definitely chart patterns fails, but chart pattern से क्या होता है कि we increase our probability that the trend is in our side, right? So that is why we trade the chart patterns. It is not like कि कुछ भी ट्रेड कर लेंगे. चार्ट पैटर्न से क्या होता है, बिकॉज इट्स साइकोलॉजी ऑफ मास ट्रेडर्स, एज आई सेड अर्लियर. सो अगर वो ब्रेकआउट करता है तो ऑब्वियसली पीपल विल फॉलो द ब्रेकआउट एंड स्टार्ट बाइंग those patterns. So it is just to increase the probabilities of your trade, so that
you can make some good profit, right? Now the point is, there are a couple of points to put to all of you. Keep it very simple. The chart pattern should be that simple that by seeing the pattern you understand there is a pattern, right? If there is a complexity, leave it aside, don't trade that at all, right? If there is a huge, variation in price, आपको लग रहा है कि जहां पे बाइंग होगा वो 15% पे, स्टॉप लॉस और बाई प्राइस में 15% का गैप है, अवॉइड दैट. क्यों लेना है ऐसा स्टॉक, राइट? वी शुड बाय दोज पोजीशंस जहां पे हमको लोअर रिस्क में एक अच्छा पाइवट पॉइंट मिल जाता है एंट्री करने के लिए, राइट? वी शुड ट्राई टू बाय देम. Then if you align the indicators as well along with the patterns like trend lines, moving averages, and that has been aligned with the formation of these patterns, then it means your probability increases more, right? That you are in to the right side of the trend. Then third part is cut your losses. I mean, loss, you should not allow a stock to go beyond whatever लॉस यू हैव थिंक व्हेन यू हैव टेकन ए ट्रेड. ठीक है, जो भी आपने सोचा है कि बॉस मैं इस पोजीशन में 5%, 6%, 7% का स्टॉप लॉस लूंगा, यू शुड नेवर एवर अलाउ टू गो दैट पोजीशन बियॉन्ड दैट लॉस. इफ इट इज बिहेविंग इन रॉन्ग वे, अगर वो नीचे जा रहा है, लीव इट. आई मीन वी नीड टू बाय दोज स्टॉक्स व्हिच आर रनिंग इनटू योर साइड. ठीक है, ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं चलना है. ठीक है, हम समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आप देखते हो कि यार ये तो फॉर्मेशन हो रहा है, एक पैटर्न है, ये बन गया है या बन रहा है, बन जाएगा पैटर्न, ले लेते हैं, चलो बन जाएगा. नेवर डू दैट. हम करते क्या है एज ए रिटेल ट्रेडर, हम लोग करते ये है कि हम लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा कम रिस्क में एक एंट्री मिल रही है, ले लेते हैं, राइट? बट like Mark Minervini said, Jesse Livermore also said, कि boss, if you are taking an entry at pivotal point when stock start breaking out, right? If you are buying some points higher than the the initial entry, it means it's like an insurance. You are paying for an insurance that stock is behaving in your way, right? So never think कि buy cheap. Never think buy cheap. Always buy high and sell higher. Okay, that should be your psychology when you are taking any trade. So what most of the retail trader do, अरे ऊपर गया था अभी नीचे आ गया, let's buy now. That is one of the costliest mistake any trader can do, right? And work on your mindset. I mean पैटर्न तो ठीक है, सब कुछ दिख जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे, you can see the patterns and all. Work on your mindset. Trend does not bend in a day or 10 or something like that. Once the trend starts, it is like it doesn't bend so soon, right? Any trend, be it any sector, just see the sectorial chart patterns. आपको पता लग जाएगा कौन सा सेक्टर चलने वाला है, कौन सा सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है कंपेयर टू द नॉर्मल मार्केट. ट्राई टू बी विद दैट sector, and once a sector start breaking out, it does not bend easily. Mark my words, it does not bend easily. जब sectorial changes आते हैं, like अभी अगर आप देखोगे सभी सेक्टर्स काफी स्टॉक काफी 50-50 DMA तक आ गए, राइट? बट देयर आर सर्टेन सेक्टर्स विच आर शोइंग एक्सीलेंट स्ट्रेंथ. ऑटो सेक्टर्स अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं. आई एम माई व्यू इज कि ऑटो सेक्टर अभी इन फ्यूचर जो चिप का शॉर्टेज एंड ऑल दैट विल solve soon. So that is why stock started forming the bases and coming out of the bases, starting making the formation. So auto sectors, reality is looking good now. Maybe it will take another couple of months, but it is looking really very good on charts. ठीक है, banks भी थोड़े अच्छे लग रहे हैं, right? So let us see how it will go. You guys can follow me here on Twitter at
AS Arvind Sharma, and Trade the Trend is my this name of the name of my Twitter account. Now coming to the questions. हाँ जी, मैंने देखा नहीं एक्चुअली, मैं प्रेजेंट कर रहा था तो पता नहीं चला क्या क्वेश्चंस हैं. लेट मी सी द क्वेश्चंस. वन क्विक, पीयूष जी आपने कुछ देखे क्वेश्चंस? इफ आई कैन सी देम. No, I cannot see any question. I'm not permitted. So chat box, in chat box you can see, right? No, I cannot see. Okay. What is the typical time window for cup formation and handle formation? अच्छा, see, विनोद मेनन जी ने पूछा है कि टिपिकल टाइम फ्रेम विंडो फॉर कप फॉर्मेशन एंड हैंडल फॉर्मेशन. सी, अल्टीमेटली दिस डिपेंड्स कि आप कौन सा टाइम फ्रेम में. सी, इट कैन बी लाइक आपका 2 महीने का कप बना, देन हैंडल बना आपका 2 हफ्ते का, राइट? इट शुड नॉट बी कि 2 साल का कप बन गया, राइट? तो 2 साल का कप बनेगा तो उसका हैंडल भी फिर आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा बनेगा, राइट? सो वी नीड टू सी कि कप फॉर्मेशन कैसा बन रहा है. अकॉर्डिंगली वी नीड टू सी हाउ द हैंडल शुड बी, राइट? सो वन क्विक क्वेश्चन. हाँ, सो द पॉइंट इज, आपको बेसिकली सी, जस्ट सी द माइंडसेट. लीव द फॉर्मेशन ऑफ कप एंड हैंडल की कितना टाइम का बना है. सी द माइंडसेट. कब बनेगा? एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में गया, उसमें फिर नीचे आके कंसोलिडेशन में बाइंग आना शुरू हुआ और ऊपर तक आया. जो जिन्होंने नीचे बाय किया वो देखते हैं कि रेजिस्टेंस आ गया लेफ्ट में, दे यूज्ड टू सेल दैट. सो दैट इज व्हाई द हैंडल फॉर्मेशन इज देयर इन कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, कि जो नीचे खरीदते हैं वो ऊपर रेजिस्टेंस पे बेचते हैं, ठीक है? तो वहां पे आपका हैंडल फॉर्मेशन शुरू होता है. नाउ हैंडल फॉर्मेशन शुड नॉट बी दैट डीप कि वो नीचे गया और वो फेल ही हो जाए, राइट? सो वी नीड टू सी हाउ द माइंडसेट वर्क्स when there is a formation, right? So it's you don't need to put any time frame in cup and handle कि कितना टाइम फ्रेम होगा. आपको देखने से पता चल रहा है कि बॉस दिस इज मेकिंग ए कप एंड हैंडल फॉर्मेशन. आंखें आपकी बताना चाहिए कि दिस इज मेकिंग कप एंड हैंडल फॉर्मेशन. दैट्स इट. इन स्टॉक मार्केट देयर इज नथिंग लाइक कि सिर्फ 4 हफ्ते का कप बनेगा और 1 हफ्ते का हैंडल बनेगा. देयर इज नथिंग लाइक दैट, राइट? नाउ कमिंग टू द next question. Atul, one quick one. Will you be sharing this presentation afterward? Okay. So we can do share that if you can DM me on Twitter. I'll share this presentation to all of you. No problem at all. या चिंतन पारेख जी ने चिंतन जी ने बोला है लोअर देन एवरेज वॉल्यूम विल आल्सो बी यूजफुल फॉर VCP. Obviously when contraction is there, it should be lower volume than average volume at the time of time and volume contraction, time and price contraction, sorry. Same pattern forming in Tata Motors nowadays. Arvind ji, can I add up something? Yes, Piyush ji, please. Like ascending triangle को मैं ना वेजिंग का पैटर्न में देखता हूँ. लाइक और वेजिंग का पैटर्न के साथ मैंने ये ऑब्जर्व किया है, दे आर प्रोन टू फेल, या फिर असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन में दे आर प्रोन टू फेल. वो अपसाइड ब्रेकआउट देता है बट वो एग्जॉशन गैप जैसा ब्रेकआउट हो जाता है और वो काफी फेल होते हुए मैंने देखे हैं. टाटा मोटर्स का पैटर्न ऊपर तो जा रहा है अभी, लेकिन उसमें मुझे वेजिंग का पैटर्न दिख रहा है. मुझे उसमें एक छोटा सा हैंडल जरूर देखना है, तभी मैं एंट्री लूंगा. See, Piyush ji, you are right. My one observation in ascending triangles and wedging up pattern is that, I mean, in ascending triangle, अगर आपका जो माउथ फॉर्मेशन है ना, जो बिल्कुल बाद में फॉर्म होता है, अगर वो काफी अपिश है, राइट, देन दैट टेंड टू फेल ए लॉट. अगर वो थोड़ा सा फ्लैटिश है, देन yeah, then it's a good. काफी जगह ऑब्जर्व किया है, दे आर वेज अप, उसके बाद वो एक छोटा सा हैंडल बनाएंगे, then that pattern is very good. Yes, I have seen many charts failing that that pattern. It is like intellect design. अगर आप देखोगे, last time it was a very nice strong setup, right?
and I've been saying to buy, even मैंने भी buy किया था, and इतना अच्छा formation था, RS was so strong and everything was there, but the formation was like in raising a form and it failed. So अभी यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल ना उस हिसाब से मुझे काफी बेटर लगते हैं. हाँ, right. So can you explain the importance of volume in buying and selling stock with one example, please? Okay. So let me show one example here itself. Let me show my screen again. Okay. Let me show my screen here. I'll show one example of volume. How volume are important. Okay. I'm showing you guys a chart of gravita. Okay. Let me share my screen. Let me share my screen here. Window, where is that? So you guys can see the gravita setup. Piyush, can you see the gravita setup here? Yes, please open it on Zerodha or MSI. मैंने यहाँ पे खोल दिया. कोई आपको दिख रहा है ना ये चार्टिंग पे? हाँ. सो वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ. देखिए, ये दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स. मैंने ये अपना ट्विटर हैंडल पे भी तब डाला था, सेटअप होने से भी पहले, जब ये सेटअप हो ही रहा था, कि कीप एन आई ऑन ग्रेविटा. राइट, ग्रेविटा ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया. अगर आप देखोगे वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, यहीं से इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया था. राइट, देन इन दिस फॉर्मेशन, राइट, जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, फर्स्ट बेस जो बना आफ्टर ब्रेकआउट, ठीक है, यहाँ पे आप देखो कितना वॉल्यूम बाइंग है. ठीक है, नाउ जैसे ये ब्रेक हुआ, नाउ यू कैन सी हाउ फास्ट स्टॉक गोज अप. राइट, 240 से सडनली 340 in 2-3-4 weeks time. That this is how the stocks, I mean volume, I mean if volumes are there, then you can see the huge buying in this stock. Right, nobody is trying to sell this. So volume is very important for any stock to show a good move. अगर volume नहीं आ रहा है, breakout हो रहा है, it means कि अभी उसमें institutional buying, mutual funds are not buying, institutional not buying, only retailers are buying, just maybe some news, maybe some hope, something is that. Right, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि स्टॉक ब्रेकआउट होना शुरू कर देता है, वॉल्यूम नहीं आता है, वॉल्यूम दूसरा बेस में भी आता है, ऐसा भी होता है कई बार. बट वी नीड टू फॉलो द बिहेवियर कि जब वॉल्यूम आ रहा है, इट मींस देयर इज समथिंग इन द स्टॉक. राइट, इट इज, वॉल्यूम डज नॉट कम कि ऐसे ही आ जाएगा. वॉल्यूम कम्स व्हेन पीपल स्टडी द स्टॉक, देन दे सी कि बॉस इसका फ्यूचर है, तभी वॉल्यूम आता है. एंड दिस वॉल्यूम इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी रिटेल participation. Right, it is because of institutional participation only. Right, hope I have answered the question. Now coming to next query is like for long term investor, is there any model to be followed? So these models are only for traders. So see, the point is even for long term investors, agar aap aajkal dekhoge, the trend is like techno funder trend. Right, people study stocks based on their fundamentals to become a long-term investor, but they follow the rule to sell based on the technicals. Right, maybe agar आपको काफी लंबा टाइम रखना है, तो you can put 200 days moving average as a stop loss for that stock. If you want to keep that stock for medium term, you can put 50-day moving average as stop loss. So होता क्या है बेसिकली कि 200 दिन के मूविंग एवरेज तक भी स्टॉक काफी बैंड हो जाता है, बट अगर आप उसके बाद भी रखते हैं, तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ट्रेड द स्टॉक्स. राइट, तो जब 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, तो वो काफी क्विक उसमें सेल ऑफ आता है स्टॉक में. राइट, so that is why for even for long term investor there should be some exit strategy. अगर वो नहीं है, तो कई बार ऐसा भी होगा कि डीएलएफ भी 1000-1200 तक गया था और दोबारा 200 तक आ गया और अभी 300-400 का चल रहा है. राइट,
So exit strategy तो होना ही चाहिए at least even for the long term investor. You can put I mean you can see any stocks I mean उसका मेजर मूविंग एवरेज क्या है, मेजर ट्रेंड लाइन क्या है, और अकॉर्डिंगली आप उसको रन कर सकते हैं. दिस इज माय व्यू. अरविंद जी, आई एग्री टू दिस, और मैंने खुद का भी इस पे ऑब्जर्व किया. 200 DMA मतलब जिस स्टॉक पे जितना ज्यादा कन्विक्शन है उस पे उतना लंबा वाला ट्रेड ये DMA का स्टॉप लॉस रख सकती है. जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है उस पे 200 का, उसके बाद 65 का, उसके बाद 30 का, 20 का, 10 का, उसके बाद कुछ नहीं. तो जितना ज्यादा कन्विक्शन है 200. और इवन अभी जब मार्केट गिर रहा है ना, तो सारे जो अच्छे स्टॉक्स भी हैं वो भी पीके जाएंगे, 200 DMA के नीचे आएंगे. जैसे ही मार्केट अच्छे होंगे ना, ये जितने अच्छे स्टॉक हैं सब पहले 200 DMA पे ही बेस बनाएंगे. मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि अब नेक्स्ट मैं चार्ट कैसे ढूंढूंगा, तो वहीं से DMA से ही अपना बेस बनना शुरू हो जाता. वो फर्स्ट बेस होगा और मैं वो पकड़ करके बैठा हूँ कि ठीक है आने दो. इवन पीयूजी, आई रिमेम्बर मार्च 20 में जब स्टॉक मार्केट गिरा था बिकॉज ऑफ कोरोना, आई रिमेम्बर मैनी स्टॉक जस्ट गो टू 200 DMA एंड देन बाइंग केम. मैनी ऑल दीज केमिकल स्टॉक आई रिमेम्बर 200 DMA टच किया या उसके थोड़ा ऊपर से ही वापस हो गए थे. बस यही होना है. या हाउ इज IT सेक्टर? वेरी बैड. IT सेक्टर देखिए शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है. द रीजन इज एक काफी ह्यूज रन, देयर वाज अ ह्यूज रन इन IT सेक्टर. ओके, ऑब्वियसली कोई भी रन है जब तक उसमें कंसोलिडेशन नहीं आएगा वो एक साइड तो नहीं चलता रहेगा, राइट? पिछले मार्च 20 के बाद मई और जून से स्टार्ट हुआ चलना. It's almost around 1.5 year, more than 1.5 year. It is running like anything. So अभी थोड़ा correction है, but the point is अभी all stocks, most of the stocks are below 50 or 65 DMA. So let them come back again their basis 50 DMA or 65 DMA के अंदर आए, then you can start adding up. Don't buy just because अभी सस्ता मिल रहा है तो ले लो. Probably I will say कि अगर आप वही वाली बात है कि लॉन्ग टर्म वाले हो तो 200 DMA का वेट करोगे एक्यूमुलेशन करने के लिए. So that is the point. How much you want to take risk? I mean, how much your risk capability is. So depending upon that, you can accumulate. My view is don't wait for. I mean, my view is don't do it now. Either wait to these stock come to 50 DMA or let them touch the 200 DMA point. Then you can accumulate. Because 50 DMA का अगर quickly आएगा तो it means again they will start moving into the uptrend direction. और अगर 200 DMA तक जाना है तो आपको थोड़ा और अच्छा प्राइस मिल सकता है. This is my view. Can you please explain about FL stock? FL stock मेरे को लग रहा है अभी सपोर्ट पे है, so यहाँ से रिवर्स होना चाहिए. It is my view. I mean, FL should reverse from here. Subject market potential reversal seen in. अच्छा, चिंतन जी बोल रहे हैं LTTS. हाँ, उनमें अच्छा कल रिवर्सल आया है. बाइंग काफी हुई है LTTS और इन सब में ना. Coforge, LTTS and few others. Right, I agree. Anything else? कोई और क्वेश्चन है किसी का? हिकल का व्यू. So हिकल, I think हिकल में कल देख रहा था. So that has let me see the chart here itself. हिकल ने तो अपना 200 DMA ब्रेक कर दिया. Nickel is clearly in downtrend. I mean, where it will go, I don't know. It's a clear exit at 493. अभी 401 चल रहा है. Any upward movement should be sold into. That's it. That's my view here. So you can contact me at my Twitter handle. You can ask me queries there itself. I will be answering those queries. My Twitter handle is AS Arvind Sharma. You can follow me there. Okay. And if you have any questions, you can put there, you can DM me those questions and probably I can answer. If anybody wants to connect more, then obviously we can discuss that, right?
Thank you, Arvind ji, for wonderful session. थैंक यू पीयूष जी. चिंतन जी भी हैं. आई थिंक चिंतन जी, your views, anything you want to share? Let me. Okay. ठीक है. I think let us close. Probably the session was just to educate more and more retail people who used to buy and sell and see how the patterns form and how they can take their trades. But next session I will be keeping on basically how to select the stocks and how to do the risk management in stocks. Okay, so that I will be taking that another session in whenever I will be taking next session. Okay. ठीक है पीयूष जी. Thank you very much everyone to join. I hope I've been able to tell about the charts in simplest way, right? Yes, Arvind ji. Thank you very much. People are asking some good books, so let me tell you some names. You can buy William O'Neill book. William O'Neill का एक book है, it is How to Trade in Stocks. मार्क मिनर्विनी का बुक है एक. मार्क मिनर्विनी के काफी बुक हैं, उनका आप मार्केट विजार्ड बाय कर सकते हो. ठीक है. यू कैन बाय जैसे लिवरमोर का बुक है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स. सॉरी, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स जैसे लिवरमोर का है, और विलियम ओनील का है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स. ठीक है. सो वो भी आप बाय कर सकते हो. एंड माय ओनली पॉइंट इज कि rather than buy these books and read these books and work on your mindset more, right? Because ultimately it's about the mindset. Buy sell सब कर लेते हैं, but स्टॉक को रखना, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना, कब तक उसको चलने देना, दैट माइंडसेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी स्टॉक मार्केट, राइट? एंड इवन और भी अभी कई सारी बुक्स, काफी बुक्स तो काफी हैं. आई थिंक मार्क विनरविनी और विलियम ओनील का आप ये 2 बुक पढ़ोगे, दीज आर मोर देन एनफ इनिशियली, राइट? देन लेटर ऑन व्हेन यू विल लर्न, धीमे धीमे आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारा देयर आर सो मेनी ट्रेडर्स इन globally and in India as well, so you can get to know them, right? Fundamental analysis. So fundamental analysis भी एक सेशन मैंने पीछे किया था. I will be taking another session of on fundamental analysis as well in future, so probably that then we can discuss, because fundamental में बहुत कुछ है कि कौन सा सेक्टर है, सेक्टर सेक्टर में क्या सेक्टोरियल चेंज आ रहा है, कुछ नया प्रोडक्ट आ रहा है, कुछ नया कुछ आ रहा है किसी सेक्टर में. So Twitter ID is this is my Twitter ID. Okay, Chintan ji, thank you very much. Anyone have any other questions? फंडामेंटल की बात कर रहे थे हम लोग. Just will give only 2-3 minutes. मैं अमर जी बोल रहे हैं कि आपका लास्ट सेशन फंडामेंटल का भी अच्छा था. थैंक यू अमर जी. प्रॉब्ली फंडामेंटल का मेनली क्या है कि ऐसा सेक्टोरियल चेंज क्या आ रहा है किसी सेक्टर में. आई थिंक वी शुड, rather than going individual stocks, we should analyze the sectors stock. I mean कि sector कैसे behave कर रहा है, then you take your bet in the leaders of that sector rather than in the laggards. Sometime हम क्या करते हैं कि यार ये स्टॉक है इस सेक्टर का और ये वो तो काफी चल गया है पर ये नहीं चल रहा है, तो जो नहीं चला है उसको ले लेते हैं कि यार ये अभी चला नहीं है, वो तो बहुत चल गया है. दैट इज वन ऑफ द रॉन्ग assumptions, राइट? जो चल रहा है वही चलेगा आगे, जो रुका हुआ है उसको कौन चलाएगा, राइट? सो take your bet in the leaders, right, rather than in the laggards. That is my experience in market, right? Whatever is going up will go up further, right?
which is not going up at all, उसको कैसे आगे बढ़ाओगे, कैसे आगे चलेगा, right? So that is my experience. Yeah. Any other question? जुबलियंट फूड का व्यू, ऐसे अब स्टॉक का बहुत सारा व्यू है, आई मीन देयर विल बी सो मेनी स्टॉक्स. रामकृष्ण जी, इफ यू कैन पिंग मी, आई मीन यू कैन मैसेज मी ऑन ट्विटर, लेट मी ओपन माय डीएम as well. I'll answer your this this question, right? What is your view on market as a whole? I mean trend and apart from auto. See, ऑटो, आद्विक जी का क्वेश्चन है कि मार्केट का होल व्यू क्या है आपका ट्रेंड का. सी मार्केट अभी पिछला जो क्लोजिंग हुआ है दैट वाज नॉट गुड. वी वर थिंकिंग कि कुछ अच्छा क्लोजिंग होना चाहिए था. द लास्ट क्लोजिंग वाज नॉट गुड. आई विल सी द बजट एंड सी couple of sessions how it is going because लास्ट सेशन से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला है कि मार्केट पता नहीं किधर जाएगा. बट उसके पहले दो दिन अच्छे थे, बट लास्ट सेशन ने थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे सेल ऑफ होना इज समथिंग विच इज ए कॉशियस व्यू इन मार्केट, राइट? एंड ऑटो सेक्टर अच्छा है, रियलिटी सेक्टर इज आल्सो सेटिंग अप, बैंक्स आर लुकिंग गुड. डाउन ट्रेंड क्लियरली आपका अभी आईटी में डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, क्लियरली एफएमसी इज इन डाउन ट्रेंड. एंड व्हाट इज देयर, लेट मी सी, और क्या था अपना ऑटो एफएमसीजी फार्मा क्लियरली इन डाउन ट्रेंड. मेटल्स आर बिट ऑफ एट समहाउ समवेयर लाइक मेक और ब्रेक सिचुएशन में है मेटल्स. आई मीन इन कपल ऑफ डेज वी विल गेट टू नो कि मेटल्स किधर जाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ माय व्यू इन सेक्टर्स. एनी सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टरल चेंज? सो सी अल्टीमेटली जो सोर्स है बेसिकली जब आप जब स्टडी करते हो वीकेंड्स पे स्टॉक्स का, आपको पता चल जाता है कि किस सेक्टर के स्टॉक्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं. अगर कहीं भी किसी सेक्टर में हाई वॉल्यूम बाइंग स्टार्ट हुआ है, सडनली हाई हाई प्राइजेस में बहुत अच्छा मूवमेंट आया है, डोंट थिंक कि वो आके खत्म हो जाएगा. इट विल टेक टाइम टू गेट बैंड, राइट? आप उसको वॉच लिस्ट में डाल दो सेक्टर को. जैसे ही किसी में भी वॉल्यूम आना शुरू हुए, हाई प्राइस आना शुरू हुए, put it in your watch list, and as soon as there is the base formation in that sector, start buying the stocks. वहां पे 20% चल गया और फिर बाय कर रहे हो, डोंट डू दैट. टेक सम टाइम, let the let the that trend come to a conclusion कि कहीं consolidate हो रहा है, वहां पे वेट करो अपना वॉच लिस्ट में डाल के. एंड देन इवन इफ यू बाय हायर एट फर्स्ट बेस, दैट आई मीन दैट इज इवन फार बेटर एंट्री. मैं हमेशा देखता हूँ कि कोई स्टॉक अगर 20% चल गया है, लेट इट बी, बहुत अच्छा है, चल गया है, मेरी वॉच लिस्ट में आ गया, आई विल बी वॉचिंग दैट कीनली दैट स्टॉक. अब जब भी वो कंसोलिडेट होगा, देन आई विल बी मेकिंग एन एंट्री इन दैट स्टॉक, राइट? चल गया है, अच्छा है, हमने ठीक है नीचे नहीं खरीदा, डजंट बॉदर मी, राइट? बट जब मेरा टाइम आएगा, आई विल बाय दैट एंड आई विल मेक मनी, राइट? नेक्स्ट है मार्केट का हो गया. एनी सोर्स फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर चेंज? सो इंडस्ट्रियल सेक्टर चेंज आपको ऐसे ही पता चलेगा. आपको व्हाट आप एक ये भी कर सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर चेंज के लिए, बट उसमें मेजर सेक्टर्स ही आते हैं. ऐसे नहीं पता चलेगा कि एग्री सेक्टर में क्या आ रहा है, बिकॉज निफ्टी का कोई इंडेक्स नहीं है एग्री सेक्टर के लिए या केमिकल्स के लिए. सो मेजर सेक्टर पता चल जाते हैं कि आप निफ्टी के इंडेक्स भी देख सकते हो, इंडेक्सों से भी पता चल जाता है कि मेजर सेक्टर का मूवमेंट्स क्या है. बट जो सेक्टर्स निफ्टी इंडेक्स है ही नहीं, उनके लिए आपको स्टॉक्स ही देखने पड़ेंगे. जब आप स्टॉक स्टडी कर रहे होगे, आपका पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर स्टैंड दिखा रहा है, राइट? एनी प्लान टू गाइड ऑन क्रिप्टो? क्रिप्टो में मैंने अभी शुरू किया है, टेक्निकल से स्टडी कर रहा हूँ. क्रिप्टो अभी मेक और ब्रेक लेवल पे है, प्रोबब्ली इट शुड रिवर्स. बहुत सारे क्रिप्टोज अभी मेक और ब्रेक लेवल पे हैं. मैं आज ही देख रहा था सारे क्रिप्टो के चार्ट, तो आई विल स्टार्ट डूइंग क्रिप्टो एज वेल. एनी वेबसाइट कैन अंडरस्टैंड रीड मोर अबाउट इंडस्ट्रियल? सी इंडस्ट्रियल और सेक्टोरियल चेंज तो पहले तो आपको चार्ट से ही पता चल जाएगा, राइट? और आपको थोड़ा सा एक काम ये भी करना होगा, एक ब्रॉडर व्यू. आप ऐसे देखो, सिंपल, बिल्कुल बेसिक. कोरोना जब आया,
तो सबका नीड था कि घर से काम करना है, तो इट वाज टू बी एन आईटी रन, राइट, इट हैज टू बी एन आईटी रन, बिकॉज सबको सपोर्ट चाहिए था कि सबको घर से सपोर्ट चाहिए, तो आईटी को चलना ही था। सेम वे में अगर आप आज की डेट में बात करो तो साफ दिख रहा है कि ईवी है नेक्स्ट फ्यूचर, राइट। सो ईवी और ईवी से रिलेटेड स्टॉक्स, ईवी को सपोर्ट करने वाले स्टॉक्स, राइट, ईवी ईवी में क्या मटेरियल यूज करते हैं उसके स्टॉक्स, राइट, क्या मेजर मटेरियल रॉ मटेरियल्स हैं टू मेक एन ईवी व्हीकल, राइट, those stocks, it's a clear, I mean, it doesn't need any rocket science, right, बेसिक इंफॉर्मेशन, राइट। हाइड्रोफ्यूल सेल आएगा तो हाइड्रोफ्यूल सेल में क्या कंपनियां होंगी, तो वो सब देखना है, राइट। अभी जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग का चल रहा है, 2 साल से चल रहा है पिछले, राइट, पिछले 2 साल पहले न्यूज, 3 साल पहले न्यूज आना शुरू हुआ था, इवन मोर देन 3 ईयर, 4 साल हो गया, शायद 17 के आसपास आया था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग होगा, राइट। नाउ एथेनॉल ब्लेंडिंग होगा तो 4 साल पहले न्यूज आया था, तब ये सारे स्टॉक जो आज हम देख रहे हैं शुगर सेक्टर के स्टॉक्स कहाँ पे थे, 50-60 रुपए, बलरामपुर चीनी 80-90 रुपया, राइट। नाउ 400-500 हो गया, 3-4 साल में आपका 5-5-6 गुना हो गया। अभी 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 मेजर बेसिस तो अभी ब्रेक किए हैं शुगर स्टॉक्स ने, नहीं तो अदरवाइज तो उनके चार्ट देख के आपको ट्रेड करने का मन नहीं करेगा। ऐसे चार्ट है पीयूसी, इफ आई एम रॉन्ग, राइट, अगर आपको याद हो तो, राइट, चार्ट आपने देखोगे तो स्टॉक ट्रेड करने का मन नहीं करता है शुगर स्टॉक का। बट अभी जो शुगर स्टॉक ने पिछले पहला इससे पहला जो बेस बनाया था उसमें दिख रहा था साफ कि ये ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है, ब्रेकआउट दे रहे हैं, राइट। सुजलॉन और यस बैंक, यस बैंक तो मैं देखता ही नहीं, चार्ट में मेरे कहीं आता नहीं तो मैं भी नहीं देखता, तो वैसे भी क्या बताऊं मैं। सुजलॉन आई थिंक कुछ कुछ तो हुआ है सुजलॉन में, सडनली देयर वाज ए बाइंग इन सुजलॉन, सो I have not seen the charts, but कुछ तो हुआ है, कुछ दिन से चल रहा है सुजलॉन काफी। ठीक है, I hope you all learn from this session, and I will keep doing such small session to benefit of all in future as well. Probably next time, like stock selections, mindset, and how to do risk management in trading and all. So that I will be uh, doing next time, where I can get the link of your next session. You will get, I mean, I'll share one of my groups link in groups where where you got my link. You will get the link of my group as well. You can join in that group. I used to keep sharing my updates in that group as well. DM में open करता हूँ अभी मैं भी फोन पे. Let me open my DM, okay? I'll open my DM. Don't worry.